Hello and welcome friends. I welcome you all to Tech Essentials. आप सबका स्वागत है टेक एसेंशियल्स के अंदर। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक एसेंशियल्स प्रोग्राम जो है इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और इसको किस तरीके से आप बेस्ट वे में अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन दिस शॉर्ट वीडियो आई विल टेल यू so what all is there in tech essentials, what are the topics and how you can actually get the maximum advantage out of this program. So without further ado, let us dive deep into this. आइए मैं अब आपको बताता हूँ। So friends, we will be giving you the access of this course online. तो हम आपको इस कोर्स का जो एक्सेस है ऑनलाइन देंगे। तो ये ऑनलाइन हमारा पोर्टल है online.cuitbox.com। इसके अंदर आपको इस कोर्स का पूरा एक्सेस मिलेगा। So you will be able to see these are the some of the introduction of the course, and here is the course curriculum. Okay, so when you open the course curriculum, you will see that it has got all the topics. So as you can see, these are some of the beginning topics. As you can see here, it contains the topics, important links, action steps. Then there is week by week lectures. So this is how it is organized. तो आप देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कंटेंट मिलेगा। तो आपको इसके अंदर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल वीक 1 में हम जाते हैं। सो गोइंग टू वीक 1, so you will be able to see the presentation, and if I go down you will be able to see the video. तो आप प्ले कर सकते हैं वीडियो को। You will be able to play the video. So this is how you can attend. You can play it full screen, make it smaller. So for every topic it is like this. तो हर एक टॉपिक के लिए आपको ऐसे ही मिलेगा। तो गूगल वर्क स्पेस, तो यहाँ स्लाइड्स हैं, एंड इन द स्लाइड्स यू विल सी द स्लाइड्स एंड यू विल ऑल्सो be able to click on the links given inside the slide. So like for example, I've clicked here, you will be able to access the links to different kinds of documents, media, websites, and then here this is the video for different topics. So first of all, let us talk about what is there in Tech Essential. तो पहले मैं समझाता हूँ कि आपको Tech Essential के अंदर क्या क्या है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने एक ये माइंड मैप तैयार किया है। तो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग step by step. So as you know that in my presentation, if you go into the introduction section, so I follow the 5S strategy. So what is the 5S strategy? So the 5S strategy says that you first start with organizing yourself. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने से। तो वो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को सुपर फास्ट बनाना है। मेक योर सेल्फ सुपर ऑर्गेनाइज, बिकॉज इफ़ यू डोंट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अगर आप फास्ट नहीं होंगे, अपने आप को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, अपना टाइम नहीं बचाएंगे, तो आगे के स्टेप्स नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो डेटा इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। Then how to organize it properly. Okay, so data is very critical to all business. So if you can't organize data, how will you manage your business? So we will organize data in step 2. In step 3 we talk about organizing your business. तो स्टेप 3 में हम बात करेंगे कि बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्रोसेसेस को कैसे सेटअप करना है, हाउ टू गिव वर्क टू योर पीपल, हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम योर पीपल। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होगा। Then in step 4 we go deep into automation. So once we have set up the processes, आपने process set up कर लिए, but now it's a matter of getting more and more work done from less people, so most efficiently. So that all can be achieved through automation. तो ये चीज़ हम कर पाएंगे कैसे? ऑटोमेशन के थ्रू। तो फिर हम बात करेंगे ऑटोमेशन की। And then coming to the last step, so this is marketing and sales. So we will also learn how to do marketing and sales. तो marketing and sales में how you can automate this step so that business can come automatically. और उसके बाद में एक स्टेप और भी इसके अंदर में आता है, वो है कंसोलिडेशन।
So in this step, what we will do is that we will consolidate all the information that you need to run the business in one place. तो हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन है आपका, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारा का सारा एक सिंगल जगह में ऑर्गेनाइज करेंगे. तो when you complete all these steps, then you will achieve success. And of course, this will begin by training yourself. So आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. I will tell you in little bit more detail about these steps. So we will cover these steps one by one. So let me start with the week one. So in the week one, friends, we will talk about organizing ourselves. So organizing yourself is the most important thing, right? Because for everything you need one thing. What is it? It is time, right? तो आपको कुछ भी करना है, आपको टाइम चाहिए. और अगर टाइम ही नहीं है तो कुछ भी और नहीं कर सकते. सो वॉट एवर गोल्स, वॉट एवर ड्रीम्स दैट यू नो यू हैव केप्ट फॉर योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैम इफ़ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, राइट? तो उसके अंदर हम बताएंगे आपको दैट हाउ टू डू योर प्लानिंग. ओके, हाउ टू डू योर वीकली प्लानिंग, हाउ टू डू योर डेली प्लानिंग, सो दैट यू कैन क्रिएट मोर टाइम. तो कैसे आप टाइम क्रिएट कर सकते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली प्लान करके. और टाइम इज़ the most precious resource that you have, right? Then another thing is that we will talk about creating meeting rhythms. So this is a special system that I learned from Vern Harnish, the founder of EO, that is Entrepreneurs Organization. तो एक स्पेशल सिस्टम जो मैंने सीखा वर्न हार्निश से, तो इससे कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है, आपका जो भी काम है वो ऐसे मुट्ठी में आपके पास आ जाएगा. सो हाउ यू कैन कंट्रोल योर एंटायर कंपनी, यू नो, बाय जस्ट वर्किंग 15 मिनट्स इन अ डे. तो ये स्पेशल सिस्टम मैं आपको सिखाऊंगा दैट हाउ टू डू दिस स्पेशल काइंड ऑफ मीटिंग्स, हाउ टू सेट अप द रिदम टू कंट्रोल योर कंपनी इन जस्ट 15 मिनट्स इन अ डे. Then we will talk about more things like capturing system. So now you're flooded with so much information. इतना सारा काम है आपके पास में, tasks, notes, contacts, ये to-do lists. So where can you organize all of that? So I will tell you a special system where instead of putting everything in your mind, तो अपने दिमाग को ओवरलोड करने की जगह में एक स्पेशल सिस्टम जिससे कि आप कभी कुछ भूलेंगे नहीं और हर एक चीज़ पे टाइमली एक्शन भी लेंगे. So we will talk about the capture system. Then we will talk about organizing email. So how can you organize email? तो email को कैसे आप organize कर सकते हैं, उसको ठीक से कैसे manage कर सकते हैं. Lot of people end up wasting too much time handling email. So we will talk about how you can easily handle email without wasting time and how you can follow up effectively. सो मैनी टाइम्स अगर ईमेल जो है मिस हो गया, उसके बाद आप दोबारा उस ईमेल को देख नहीं पाते हैं, राइट? सो इफ़ द ईमेल गेट्स मिस्ड, इट्स गॉन फॉर एवर. बट आई विल टेल यू अ स्पेशल सिस्टम वेर यू डोंट हैव टू worry about emails getting lost and how you can follow up effectively with other people using email. Then we will talk about organizing contacts in an effective way. So you deal with people every day in and day out. So how can you organize your contacts effectively? So whenever you want, you will get the information. And another important thing that you learn is Google Groups. So Google Groups जो है ये एक बड़ी amazing technique है. So using this technique, you can talk to multiple groups of people. You can even send them email. You can share documents with different kind of permissions using Google Groups. So we will talk about Google Groups. So guys, this was week one. Then we come to week two. So then we talk about organizing data. Okay, so before we go to organizing data, it is very, very important to learn about cloud technology. And GWS means Google Workspace. इसको पहले लोग G Suite भी बुलाते थे, ओके, गूगल एप्स भी बुलाते थे. तो गेटिंग आवर सेल्फ टेक savvy, तो अपने आप को कंप्यूटर अगर आप ठीक से नहीं यूज़ कर सकते, इफ़ यू नॉट एबल टू प्रॉपरली यूज़ द कंप्यूटर, द फोन दैट इज़ ऑलरेडी विद यू, then you will be able to get much less work done. So we need to increase our productivity. तो अपनी जो efficiency है, productivity है, उसको बढ़ाना है. तो उसके लिए कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे. तो पहले पार्ट में आप सीखेंगे अबाउट गूगल ड्राइव. तो गूगल ड्राइव इज़ द प्लेस वेर यू स्टोर ऑल योर डेटा. तो डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना है, फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना है, शेयरिंग करना है डेटा का. कोई चीज़ अगर बदल जाती है, सो सपोज इफ समथिंग चेंजेस, हाउ कैन यू सी द रिवीजन हिस्ट्री एंड हाउ यू कैन मैनेज डिफरेंट वर्जन्स.
So we'll talk about this in this section called Google Drive. Then we move on to Gmail. So in Gmail also there are so many ways in that you can organize your emails effectively. So whether it is by putting labels, filters, undoing any wrong mail that you have sent, snoozing, send later. So there are many features here. So you will be learning about those, and we will also teach you some really amazing add-ons that can increase your efficiency and functionality in Gmail. तो बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आप सीखेंगे. आप अपनी ईमेल को एकदम प्रो की तरह मैनेज कर पाएंगे, इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन ईमेल. So you will learn all of these things in this section, and then we come to calendar. So calendar is nothing but managing time, and which is the most critical. So how do you create events? How you remind yourself? How can you remind others? Invite people. So the most effective people in the world, they follow a calendar. तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो कैलेंडर को मैनेज करना आना बहुत ही क्रिटिकल है. तो ये चीज़ हम यहाँ सीखेंगे. इवन मेकिंग ग्रुप कैलेंडर्स और टीम कैलेंडर्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू विल बी लर्निंग हेयर. Now coming to the another part of GWS, this is Google Workspace. This is part 2. So in this we will learn about some more important applications that are there in Google. So we will learn about forms. So forms is an amazing technique where you can actually collect data. Okay, so you can actually collect data from customers, from employees. You can ask them questions and get the responses in a very organized way. तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो गूगल फॉर्म जो है ये बहुत ही अमेजिंग है. इट हेल्प्स यू कम्प्लीटली ऑटोमेट योर वर्क. इनफैक्ट दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्कफ्लो ऑटोमेशन. तो वर्कफ्लो ऑटोमेशन जो हम आपको बाद में सिखाने वाले हैं, इवन उसका बेसिस भी गूगल फॉर्म्स है. और ये आपके अंदर आपको ऑर्डर लेना है, वेदर यू वांट टू टेक एन ऑर्डर, वेदर यू वांट टू गेट अ कस्टमर फीडबैक, वेदर यू वांट टू गेट सम काइंड ऑफ इंक्वायरी. तो आपको कोई इंक्वायरी चाहिए उनसे, सेल्स की इंक्वायरी, सर्विस की इंक्वायरी. सो ऑल ऑफ दैट विल बी डन थ्रू गूगल फॉर्म्स. Then also we will go through basics of Google Slides. So if you have to give a presentation to prospective dealers, distributors, customers, then you can use Google Slides effectively. तो आपको अपनी कंपनी के लिए कुछ भी प्रमोशनल मटेरियल बनाना है, any marketing material has to be created, all of that can be done on Google Slides. Then of course Google Docs. So Google Docs is the equivalent of Microsoft Word from Google. So how to create docs, how to create different version histories. We will talk about very interesting features which are not there in other applications like translation, like voice typing. So you don't even have to type. तो आपको कीबोर्ड पे अगर टाइप नहीं करना आता, आप बोल करके टाइप कर सकते हैं. यू कैन टाइप इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस. ओके, तो ये कैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट में रिसर्च करना है, यू वांट टू डू सम रिसर्च. सो सम रियली अमेजिंग फीचर्स ऑफ गूगल डॉक्स विल बी डिस्कस्ड हेयर. Then coming to week 4. Okay, so in week 4 we will talk about organizing data. Okay, so now in terms of organizing data, we will tell you how you can create an effective document management system. Okay, so you can create a document management system which allows you to access all the information easily, share it with people, locate it, and again make sure that it is secure and safe at the same time. तो ये हम सिखाने वाले हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, तो जब भी ज़रूरत पड़े आपको इमीडिएटली और मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े. देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GWS एंड Gmail. तो कई सारे लोग जो हैं, आप में से मैनी ऑफ यू आर यूजिंग फ्री gmail.com एंड GWS इज़ दी फॉर्मल वर्जन. ये जो GWS है, गूगल वर्कस्पेस, ये एक पेड वर्जन है. तो दोनों में क्या फ़र्क है, वेदर यू शुड गो इन फॉर GWS और नॉट, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सारी फाइल्स का आप एक इंडेक्स बना सकते हैं जिससे कि कभी भी खोलना हो इमीडिएटली आपको मिल जाएंगी. हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा लाइक फोटोज़ एंड वीडियोज़, हाउ यू कैन शेयर डेटा इफ़ यू वांट टू सेंड फाइल्स. फॉर एग्जांपल मैनी टाइम्स होता है कि आपको बैंक के लिए KYC डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स भेजने हैं या प्रोडक्ट के कैटलॉग भेजने हैं. तो हाउ यू कैन सेंड इट इन अ सेकेंड जस्ट लाइक दिस. ओके,
तो ये आप सीखेंगे फ्लैश शेयरिंग के अंदर में. देन हाउ टू प्रोटेक्ट योर जीमेल अकाउंट, वेदर इट इज़ गूगल वर्क स्पेस और जीमेल अकाउंट, you know all your data is inside that. आपके सारे documents, your photographs, your videos, okay, and even your mail. So how can you protect it from getting hacked? तो वो कैसे करना है, और अगेन पासवर्ड को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखने वाले हैं. तो दिस इज़ अबाउट हाउ टू organize your data. In week 4 you will be learning about how to organize your data. In week 5 we will go more deep into data analysis. So if you want to become a successful entrepreneur, you must know how to analyze the data to take meaningful decisions. तो अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो डेटा को एनालाइज कैसे करना है वो आना बहुत ज़रूरी है. तो डेटा ही से आपको पता लगेगा कि आप प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, whether you are going forward, going backward, and what to do next. So for that you will be learning Google Sheets. So we will talk about some basics of Google Sheets. So Google Sheets is the Google version of Microsoft Excel. तो Microsoft Excel जैसे है वैसे ही Google का जो वर्जन है उसे Google Sheet बुलाते हैं. एंड Google Sheets is the basis of all automation. तो आने वाले चैप्टर्स में आप सीखने वाले हैं हम मार्केटिंग को कैसे ऑटोमेट करें, how we automate sales, how we automate accounts, how we automate HR, and so many other departments, okay, and processes. So for that, it is essential that you learn this. You should learn how to automate all of this. Then you need to understand about Google Sheets. So we'll take you through different formulas, different basics of analyzing the data. So we will go in depth into Google Sheets. So once we have learned about the basics of Google Sheets, we will go into creating data masters. So all your data related to employees, to customers, to vendors, to items, to orders. So how you can create different kind of data masters. तो data के अलग अलग masters कैसे बनाने हैं so that all the data is in one place. So many times people are having data but it is there scattered across the company. ओके तो डेटा एक जगह में नहीं है, सब जगह फैला हुआ है, कस्टमर का डेटा ही नहीं मिल रहा है. आज मार्केटिंग करनी है, सेल्स के लिए प्रमोशन करना है, बट डेटा ही नहीं अवेलेबल एक जगह में. सो हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दैट डेटा of different types in different types of masters. So we will be sharing some templates also. So this will be very, very important session. Then in week 7 we come to process automation and tracking. So now is the actual automation will start. Okay. So we will talk about different kinds of processes. So why you need process and why you need to track them. Okay. So we will talk about how to create a flow management system. So FMS stands for flow management system. तो आपका जब ऑर्डर आ जाता है, so when you get an order till the time you get paid, जब तक पेमेंट आती है, many steps are there in the business which can go wrong. Okay. So from getting the order to getting the payment, many things can go wrong. Okay. So how can you track each and every step and make sure that nothing goes wrong, right? To do that, guys, we create something known as the FMS, right? And then we will talk about cyclical process tracking, how you can track processes that should happen on a systematic way. तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिपीट होनी चाहिए. उनको हम कैसे ट्रैक करेंगे? I will tell you about different levels of entrepreneurship, okay, and I will also talk about why to automate. So why should we automate processes? So before we go into how, we will also explain and go into this, that why should we automate processes. Then we will talk about automating tools. So what are the different tools that we will use for automation? So one of the most amazing tools is Formule. We'll talk about that. Then we will talk about simple workflow automation. Okay, so there are many different kinds of processes. Some processes are simple, like just giving a leave application. Someone will fill the leave application and someone will approve. तो ये सिंपल वर्कफ्लो ऑटोमेशन हम सिखाएंगे, जिसमें कि सिंपल एक आदमी को जो है अप्लाई करना है, दूसरे को अप्रूव करना है. चाहे वो लीव एप्लीकेशन हो सकती है, चाहे वो किसी तरह की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग, राइट? एंड देन वी विल गो ऑन टू मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. So for example, complex workflows like purchase approval. So how can you do some kind of a purchase approval where first the manager will approve, then
another head of the department will approve, and then probably you will approve. So you can create a workflow where multiple people are involved. So in simple workflow, normally just 2 or 3 people are involved. In complicated workflow, more than 2 people are involved. Then we'll talk about different examples. So I will show you different examples of this workflow automation, such as creating a help desk, visitor management, courier booking, delivery tracking. In fact, you can create any kind of process automation. तो आप किसी भी तरह के प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाएंगे. यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे. And again, another interesting thing is that for every process, wouldn't it be amazing if you are able to get all the reports in one place? कितना मज़ा आएगा कि अगर सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं अपने आप आपको मिल जाएं, राइट? तो उसकी बात हम यहाँ करेंगे. Then we come to week 8. So in week 8, we will come to another very, very important topic. Now, what is this topic? This is automated task delegation. Okay. So doing work yourself is very easy. And the most important thing is to actually get work done from others. तो खुद से काम करना तो बहुत आसान है, बट औरों से काम करवाना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो कैसे औरों से आप काम करा सकते हैं, तो यूजिंग अ ऑटोमेटेड सिस्टम, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे वीक 8 में. उसके बाद आइए हम बात करते हैं वीक 9. सो इन वीक 9 वी विल गो इन टू सम मोर क्रिटिकल सिस्टम्स दैट यू नीड इन योर कंपनी. सो दिस सिस्टम इंक्लूड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो इन्वेंट्री जो है, हाउ टू कीप द इन्वेंट्री ऑफ डिफरेंट गुड्स दैट यू हैव, how to send them, how to receive them, so create a dispatch challan. So all of that will be covered here. And then how to manage projects, coordinate with multiple people. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपको मल्टीपल लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, सारी एक्टिविटीज़ को टाइमली कराना है. तो मेकिंग श्योर दैट ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड ऑन टाइम and properly. So we will cover that here in the PMS. In week 10, we come to accounts and documentation. So here you will talk about how can you automate document generation. So we need to create different kinds of documents for our company. For example, you need to create invoice, you need to create performa invoice, you need to create quotations, you need to create dispatch challans, you need to create different kind of proposals, certificates, warranty letters. So anything, any kind of document can be created automatically. Right now, a lot of our time gets wasted into creating documents. तो कैसे ये टाइम बचा सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स अपने आप क्रिएट होंगे. उसके बाद में हाउ कैन यू ऑटोमेट चेकलिस्ट एंड सर्वेस. सो फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, okay, we have to make sure that they are done properly using automated checklists. And sometimes we also need to go and study the customer sites, do surveys to make sure that everything is there to execute the order. तो ये कैसे कर सकते हैं हम. Then collecting payments, doing invoicing, sending quotations. So many of the accounts related activities, they take up a lot of our time or are not done properly. तो उसको कैसे करना है, पेमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी. तो ये एक अमेजिंग सिस्टम हम आपको सिखाने वाले हैं. So in week 10 we will talk about accounts and documentation. Then coming to week 11. So in week 11 we get started with sales and inquiry management. So I will talk about how can you set up an amazing CRM system. So the CRM stands for customer relationship management. So the inquiries that you are getting, how can you make sure that each and every inquiry is getting followed up properly. तो हम कैसे इंश्योर करें कि एक एक इंक्वायरी जो आ रही है उसकी प्रॉपर फॉलोअप हो रही है, हु इज़ फॉलोइंग अप विद देम. And this entire system, how to make sure that from getting the inquiry to getting the order, you are able to track every step. तो आप हर एक स्टेप और इंक्वायरी आने से ऑर्डर आने तक प्रॉपरली फॉलोअप कर सकते हैं कस्टमर को, एंड मेक श्योर कि आपका जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो. तो ये हम करेंगे वीक 11 में. देन वी कम टू अनदर वेरी क्रिटिकल टॉपिक कि हाउ टू जनरेट दोज इंक्वायरीज, राइट. आपने कहा कि ठीक है, ऑर्डर कन्वर्ट कर दिया, यू हैव कन्वर्टेड the inquiry to order, but what about getting more inquiries? So in week 12 we will talk about many things. First of all, we will start with farming versus hunting. What is the concept? So what are the different techniques of actually marketing? Then I will talk about creating an automated marketing funnel.
सो हाउ कैन यू यूज़ ऑटोमेशन टू गेट इंक्वायरीज ऑटोमेटिकली, तो कैसे इंक्वायरीज अपने आप आ सकती हैं यूजिंग दी ऑटोमेटेड मार्केटिंग फनल। फिर हम बात करेंगे ईमेल। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, हाउ टू डू इट इन द राइट वे, how to make sure that you don't get blocked, and even how to create email signatures that will market for you. So we will go in depth into email marketing and create an amazing system to generate inquiries for you by using email. Then once we have done email in week 13, we will go into WhatsApp. So like email, another amazing medium guys is WhatsApp, right? So how can we use WhatsApp for marketing ourselves? So what is the system, how to set up the gateway, how to make sure that you are following the proper guidelines, you don't get blocked or anything. So there are different techniques, and I will also talk about how you can use QR codes for marketing. तो QR कोड्स और क्विक रिस्पांस कोड्स क्या हैं और ये मार्केटिंग में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे. Then coming to week number 14. So in week 14, we will consolidate everything. So now you have learned about technology, you have organized your data, you have created processes, you have set up automation of all the processes, marketing, sales, but now how to control the company. तो कंपनी को कैसे कंट्रोल करेंगे, वी विल डू इट यूजिंग समथिंग नोन एज इंट्रानेट. तो इंट्रानेट इज़ अ इंटरनल वेबसाइट ऑफ द कंपनी वेयर एवरीथिंग related to all departments can be seen at once. You can also call it like an ERP. तो उसको आप ERP भी बुला सकते हैं. तो इंट्रानेट में आप अपनी सारी कंपनी का डेटा एक जगह में देख सकते हैं, वेदर ऑन PC और ऑन मोबाइल. सो यू विल बी एबल टू रन द कंपनी, see the different things happening in different departments. You will see all live data in just one place. So this will be amazing and this will help you grow. तो कल को आपकी कंपनी ग्रो करती है, whether it is one location or 100 locations, you will be able to control all of it, right? So this we will build using something known as Google Sites. So we'll go deep into this. And lastly, coming to week 15, I will take a session to tell you about how you can save cost using technology. Okay, so what you can do to save cost using technology. So guys, this is the summary. This is a altogether chart for the week wise, and you will see the same structure being followed here. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, like say up to week 15. And all the presentation and all the videos are kept here. तो सारी presentation, सारे video यहाँ पर हैं. अब हम बात करते हैं कुछ important links की. तो guys, एक तो यहाँ पर you see this is a link here for the participant detail form. Okay, so this participant detail form, we request you to fill this form by clicking on this link here. When you click on this, we need these details so that we can give you access. So we need to make sure that we give you access to different types of files that we have created for you and templates. Also, please make sure that you have already done your technology quotient report. So this report will help you understand that where you are with the current level of technology you are at. तो अभी आप कितने टेक सेवी हैं, कितनी टेक्नोलॉजी को ठीक से इस्तेमाल कर पाते हैं. तो ये एक फ्री रिपोर्ट आपको आएगी जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी किया जाएगा कि अभी आप कहाँ पे हैं और अपने आप को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी एंड हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ more technology savvy and more efficient in using technology. So which are the different areas where you are lacking. So please fill this form. And lastly, we come to a very important thing. This is the implementation checklist. Okay. So this checklist we have got specially prepared for you. It will help you track your implementation. When you click on the link, you will be able to make a copy. Here you will see that there are all the different topics one by one. All the topics are here. In fact, if you click on any topic, आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो उसका लिंक भी यहाँ मिल जाएगा. You can go directly to that topic online, right? So you will be able to open the topic directly from here, and here you can write down your action steps. तो यहाँ पे आप अपने action steps लिख सकते हैं, अपनी priorities define कर सकते हैं. So you can write down your action steps here, okay? And you can write down the priorities and who will complete. So whether you will be doing it or someone else in your company will be doing it. And another amazing thing is that कि इस शीट के अंदर रिमाइंडर्स लग जाते हैं तो ये अपने आप ईमेल पे फॉलो करेगी. दिस शीट विल ऑटोमेटिकली फॉलो अप with different people that you have on email.
regarding the different work that you have given them with regard to automation and with regard to implementing this course. So इस कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने जो भी काम दिया होगा वो आसानी से आप ट्रैक कर पाएंगे. It even has a day wise index where you will be able to see the day wise topics right from here. Okay, so the other topics like day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, all of these will appear here in this sheet. So guys, so this is very important. Make a copy of this, and then you will be able to track step by step your implementation during the program. So but still you may need support. तो आपको सपोर्ट फिर भी लगेगा. तो सपोर्ट के लिए प्रोसेस क्या है, तो वो मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ गाइस. इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस दैट वी हैव फॉर सपोर्ट. So for support, you just have to remember one link. So this is our link. This is called itbx.in/helpdesk. So by clicking on this link, you can just submit a new ticket. Just enter your details. What is the problem that you are facing? You can even upload a snapshot. अगर आपने कोई फोटो या वीडियो अपलोड करना है, क्या दिक्कत आपको आ रही है, you can do that from here. या कोई लिंक आप शेयर करना चाहते हैं. So our help desk operators are already working on calls. The moment they get this, when they are free, so it may take some time. तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, but normally we try to dispose the call within the same day. Okay, तो हम कोशिश करते हैं कि within 24 hours आपकी जो भी issue है, my team will call you. They will take you online and they will resolve the problem. So if there is something that you are not able to figure out and something that is not working for you, then you can simply raise the help desk ticket from here. You will get a acknowledgement email with the ticket number. तो आपको एक email भी आएगा, उसमें टिकट नंबर भी होगा. तो इस तरह से सिस्टमैटिकली हम लोग भी बैकएंड में ट्रैक रख पाते हैं as to what complaints have been resolved and what are pending. So this is a support link. You just have to remember that. Please feel free to browse through all the different links. There are some action steps here, and there are some social media links where you can connect with us to see our different kinds of content online. And this is week by week. This is the content on the left side. So once again, I welcome all of you to this amazing journey of using technology for making your business scalable, resilient, and super strong. तो आपका बिजनेस नॉट ओनली ग्रो करेगा, यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस टू एनी स्केल, बिकम super efficient, waste less time, do much more in the time that is already there with you, using less time, less manpower, and again adapt to any kind of changes. So whether it is corona, whether it is fire, whether it is flood, whether it is economic changes, so technology is something that can really help you. So thank you once again for joining us. Congratulations, and I look forward to seeing you on this amazing journey. So get started now. Bye bye and take care.